Hello dear friends, I welcome you all to my this video, and in this video we are going to cover world literature. We are going to cover significant texts from European, Russian, African and Latin American literature, because I can see in UGC net examination so many questions is there from European as well as Russian, African and in Latin America literature. So in this video I'm going to prepare you if there is any questions from here, from European literature, from Russian literature, from African literature and Latin American literature. You are going to definitely crack it. You will crack the answer in your first attempt only. Okay, so let's get started. And if you are new to my channel, please subscribe to my channel. For I hope you have been to my previous videos and you know now my teaching style. Okay, it's very short and simple. I speak point to point, and I don't means max I don't believe in giving you so much. I don't want a very long videos. In just a very short videos, mostly my videos are from 10 minutes to 20 minutes, and in this only I have covered so much. So if you haven't watched my previous video, please watch it. Okay, so let's get started. So what I have done in this here, that I have mentioned the reason, for example European literature, Russian literature, African literature and literature, then author, then major works, year of publication and the key concept and the themes. Okay, let's see how we will do it. So the things, that means the writer you found in the bold, that is really very important, but I have also mentioned some other writers as well as. So first of all, let's start with our first minor writer, that is Miguel de Cervantes, and he wrote Don Quixote. Okay, पार्ट 1 आता है 1605 में एंड पार्ट 2 आता है 1615 में, और ये एक सटायर था शिवल रोमांस के ऊपर, कंसिडरिंग वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न नोवेल्स एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ रियलिटी वर्सेस इल्यूजन. ओके, सो इससे बाहर आपसे नेट कुछ भी नहीं पूछेगा. अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया और मेरे ये वीडियो देख ली, आपका काम हो चुका है. ओके, so you have to subscribe to my channel for more such videos. Now let's move to our second writer, that is Dante Alighieri. We have the Divine Comedy. Everyone have heard this name. और इसका पब्लिकेशन कब से कब तक होता है? इट्स पब्लिश्ड बिटवीन 1908 to 1920. Okay, 18 means 12 years span of time. Okay, it's an epic poem divided into 3 parts. Always remember how many parts this work, the Divine Comedy, is divided. It is divided into 3 parts. Okay, the first one is Inferno. Okay, very important, please write it down, or I will provide you this PDF on my Telegram channel. So if you haven't joined my Telegram channel, please join it, and if you are looking for the link, it is in this description also. And if you see my YouTube page, there you will see my bio, and there is also link. You can join from there also if this description link isn't working for you. So let's move. The first part is Inferno. Okay, then we have Purgatorio, then Paradiso. Okay, on this exposes the afterlife of the Christian ethics. Okay, so hell में जाते हैं कुछ लोग heaven में जाते हैं, all these things. और अगर आप if you want a video on the Divine Comedy by Dante, so you can comment me down. I will make a separate video for it. Now let's move to the another writer, which is Goethe, और इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है Faust. इसका पार्ट 1 1808 में आता है और पार्ट 2 1832 में आता है. इट्स अ ट्रेजिक प्ले, इट्स अ ट्रेजेडी प्ले है. ओके, अबाउट अ मैन हु मेक्स अ पैक्ट विद द डेविल. एक जो है डेविल के साथ पैक्ट. देयर इज वन वर्क नेम डॉक्टर फॉक्टस बाय मार्लो. ओके, such same kind of thing. Then exploring the theme of desire, redemption and the human expression. Okay, so you have to remember these points. Then we have our fourth writer from European literature, that is Franz Kafka, and very important work, the Metamorphosis. इसमें क्या होता है, एक नोवेल है ये, जिसमें एक मेन अपने आप को किस में बदल लेता है, जाइंट इंसेक्ट में, और फिर जो भी तबाही लाता है, जो भी परेशानी, हॉरर, ये सब चीज़ें बनती हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन, उसी का ये सब पूरे नोवेल में यही सब कहा गया है. और इसमें हमें क्या दिखता है, एलिनेशन थीम दिखती है और एसेंशियल डिसअपियर दिखता है. और ये वर्क कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1915 में. ओके, देन वी हैव अनदर राइटर
एल्बर्ट कैमूस, इनका एक बहुत ही अच्छा वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है, द स्ट्रेंजर, एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 1942। इट इज़ ऑल्सो एन नोवेल दैट एक्सप्लोर एब्सर्डिज्म, मतलब यू कैन से बकवास, कुछ भी कोई मतलब का नहीं, जो एग्जिस्टेंशलिज्म को भी दर्शाता है, फोकसिंग ऑन द एलिनेशन ऑफ एन इनडिफरेंट मैन इन द वर्ल्ड विदाउट मीनिंग. Okay, so you have to remember these writers from European literature, very important. Okay, now let's move to the Russian literature. Now we will see some writer from the Russian literature. Okay, so first of all, what we have लियो टॉल्स्टॉय. ओके, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है वार एंड पीस, और ये पब्लिश होता है 1869 में. इट्स अ नॉवल दैट डिपिक्ट्स द लाइव्स ऑफ रशियन एरिस्टोक्रेट्स ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार जो होती है, उसमें जो रशियंस एरिस्टोक्रेट्स है उसके बारे में दर्शाया गया था. किस वर्क में? वार एंड पीस का पब्लिश हुआ 1869 में. किसके द्वारा पब्लिश हुआ? लियो टॉल्स्टॉय के, है ना. और इसमें थीम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री, फेट एंड नेचर ऑफ पावर के बारे में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं. देन वी हैव अनदर माइनर राइटर, फ्योडोर डॉस्टोवेस्की, और इनका वर्क है क्राइम एंड द पनिशमेंट, और ये कब पब्लिश होता है? 1866 में. इट्स एन नोवेल एक्सप्लोरिंग द मोरल डायलेमास एज वेल एज गिल्ट एंड द रिडेम्पशंस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन हु कमिट्स मर्डर. एक जो यंग मैन रहता है वो मर्डर कर देता है, और इसमें बहुत सारे डायलेमा, उसको गिल्ट होता है बहुत ज़्यादा, और ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं. ओके, अब हम कहाँ पे चल रहे हैं? रशियन लिटरेचर में, है ना. रशियन लिटरेचर से ज़्यादातर अभी तक क्वेश्चंस नहीं देखे हैं मैंने नेट में, बट जितने भी देखे हैं इन राइटर्स को अगर आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा. ओके, वी हैव एंटोन चेखोव. Okay, we have a work of him, The Cherry Orchard, which was published in 1904. It's a play focusing on the decline of the Russian aristocracy and the rise of the middle class, highlighting the inevitability of change. Then we have Nikolai Gogol, and he wrote Dead Souls. Dead Souls किसने लिखा है? निकोलाई गोगोल ने. और कब लिखा है? 1942 में. It is a novel satirizing Russian society through the story of a man who buys dead serfs to exploit loopholes in a property law. Okay. Then we have another person named Alexander Pushkin, और ये कौन सा वर्क लिखते हैं? यूगेनी ओनजिन, और ये कब पब्लिश होता है? 1833 में. इट्स अ नोवेल इन वर्स दैट एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव, फेट एंड द क्लैश बिटवीन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड द पर्सनल डिज़ायर, है ना. पर्सनल डिज़ायर और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन में एक क्लैश हो जाता है, उसको दिखाया गया है. किसने दिखाया है? अलेक्जेंडर पुस्किन ने. किस वर्क में दिखाया है? यूगेनी ओनजिन में. एंड व्हेन इट इज़ पब्लिश्ड इन 1833 में. All right, let's move to the African literature. Now we have African literature. So African literature में बहुत ही फेमस राइटर है, आपने सब नाम सुना होगा, चिनुआ अचाबे. ठीक है, चिनुआ अचाबे, and Things Fall Apart. He also got the Nobel Prize, and 1958 में ये वर्क पब्लिश होता है. It's a novel depicting the impact of British colonialism on the Nigerian village, exploring theme of tradition versus the change and the cultural clash. Okay, you have to remember this, the theme and the important date. Please remember Things Fall Apart was published in 1958 by Chinua Achebe. Okay, now we have Ngugi wa Thiong'o, और इनका वर्क है द ग्रेन ऑफ व्हीट, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1967. इट्स अ नॉवल सेट ड्यूरिंग द माओ माओ अपराइजिंग इन केनिया. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. व्हेन दिस नोवेल इज सेट, इट इज सेट इन माओ माओ अपराइजिंग इन केनिया, exploring the theme of independence, betrayal and the complicities of the freedom. Then we have very famous writer वोल्सवाइनका, डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन इनका वर्क है, जो कि पब्लिश होता है 1975 में. इफ़ यू वांट सम मोर राइटर्स, और इफ़ यू वांट इन्हीं राइटर्स के अगर आपको और ज़्यादा वर्क चाहिए, व्हाट यू कैन डू, you can add it in this PDF. I will share it on the Telegram channel and you can add it. Or if you want that
particular, like I want a very long videos on African literature, I can also do it. So you just have to comment me and you have to subscribe my channel so that you will get an update. If some students wants me to want a full video on the African literature of about 1 hour, I can create it with all the writers. Means I don't take so much writers, I just take only important writers, but I will include more works, as well as I will add summaries, as well as all the important facts that is really very important for from the point of view of the net examination. Okay, I will do it for you guys. Okay, so just you have to comment me and let me know. Then we have Nadine Gordimer, Julie's pupil, July's pupil, and it was published in 1981, a novel set during the financial civil war in the South Africa, exploring theme of race, power dynamics, and survival in the change in the society. But let's first of all discuss The Death and the King's Horseman. It's also a play based on the historical events, exploring the conflicts between the colonial and the indigenous values. So see, whatsoever अफ्रीकन लिटरेचर में जितने भी आपको वर्क्स मिलेंगे ना, इसमें आपको एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट सी देखने मिलेगा जो कॉलोनाइज्ड पीपल है और इंडिजिनियस पीपल है इनके बीच में. ओके, सो इन द सेम डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन में भी आपको क्लेश ही मिलेगा, क्लैश मिलेगा. ओके, बिटवीन टू thing, colonial and the indigenous values, as well as importance of the duty and the sacrifice. Okay, now let's talk about the Nadine Gordimer, July's Pupil. It was published in 1981, a novel set during the fictional civil war in the South Africa. एक फिश असल में वार नहीं होती है, बट इट्स अ फिक्शनल, मतलब ऐसे ही नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये रियलिटी में नहीं होती है, बट इट वॉज देयर. ओके, देन वी हैव बूची एमिचिटा, The Joy of the Motherhood, which was published in 1979, a novel exploring the roles and the expectation of the woman in the traditional Nigerian society and the impact of colonialism on the gender roles. Okay, so now here we are done with the African literature. Now we'll move to the Latin American literature. Latin American लिटरेचर की तरफ चलते हैं. लैटिन अमेरिकन लिटरेचर से समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा तो लैटिन अमेरिका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे मैं एक अमेरिका का वर्ल्ड बना देता हूँ. ये हमारा अमेरिका रहा और यहाँ पे ये साउथ अमेरिका है. ओके, so Latin America is there. Okay, so this is Canada, this is USA, Mexico, okay, so all these things. So the people from Latin America जो लैटिन भाषा में बोलते थे, they are called as the Latin American literature. So we have this is America. Okay, और यहाँ पे ये है. So people from here, from the South America countries, or you can say middle of here, they are called as Latin American. Okay, so now let's move further. Now let's see our first writer, Gabriel Garcia Marquez, 100 Years of Solitude, which was published in 1967, and it's a seminal work of the magical realm. Magical realms मिलता है. हमारे पास एक राइटर है सलमान रश्दी. ओके, ही हैव रिटन मिडनाइट चिल्ड्रन, जहाँ पे हमें वहाँ पे भी मैजिकल रियलिज्म मिलता है. एक क्वेश्चन भी आ चुका है नेट पे, है ना. सो it is the same 100 Years of Solitude, really very important work, as well as I have gone through the line by line and I found this work so amazing. That's really impressive. Now it depicts the rise and the fall of the Bunendia family in the fictional town of the Morcando. You have to remember this name. What was the fictional town name? The fictional town name was the Macando. Okay, exploring theme of time, memory and fate के बारे में बताता है. Okay. Now we have very important writer, Pablo Neruda, 20 love poems and the Song of Despair, which was published in 1924. It's a collection of the passionate and the sensual poetry exploring love, longing and the despair. Okay, so what I am going to do, I am just providing you this PDF. You just add some more writers as well as, and okay, and as well as I have covered all the major and minor writers, but these two writers is very very important in Latin American literature, so I have covered this. But let's discuss some minor writer as well as. So we have George Louis Borges, इन्होंने लिखा है Ficciones, which was published in 1944, and it's a collection of the short stories that explore complex philosophical ideas through the fantastical metaphysical narrative.
narratives. So he uses the metaphysical narratives. Okay, if you want some more details, you can find it either on Wikipedia or on Google, and every detail is there. Okay, then we have Isabel Allende, The House of the Spirit, which was published in 1982. A novel blending history as well as magical realism is also there. See, I have mentioned these writer also. I think we have never heard these names before, but you know, if there is something, but if you are watching my video and it got stuck in, मतलब आपके दिमाग में स्टक कर जाती है, और सर ने वो वाली वीडियो में ये बताया था, ये राइटर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है और ये थोड़ा सा वर्क याद आता है, देन इट विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज यू नो विथ मेजर राइटर्स तो आपको बहुत अच्छे से करनी ही है, उसके साथ साथ कुछ आपको माइनर राइटर्स भी पता होना चाहिए, तभी काम बन पाएगा. ओके, सो दैट इज द रीजन every time with the major writers I not forget to bring some important minor writers as well as. Okay, so we have Isabel, The House of the Spirit, which was published in 1982, a novel blending history and the magical realism. यहाँ पे भी आपको मिलेगा. Maybe there may be net questions थे, 3 वर्क दे देंगे, लैटिन अमेरिका की दे देंगे राइटर्स आपको ये दे देंगे, ग्रेबियल ग्रेशिया मैक्यूज का दे देंगे 100 years, एज वेल एज एजाबेल एलेंडे का दे देंगे द हाउस ऑफ द स्पिरिट, और एक 2 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे बताइए इनमें से 2 लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के जो वर्क जिसमें मैजिकल रियलिज्म यूज हुआ है. देन यू शुड नो इट, दैट इज द रीजन व्हाई आई bring this to you. Okay, so now we are good to go to move to next writer, that is Octavio Paz, The Labyrinth of the Solitude, very important, which was published in 1950. ठीक है, don't confuse between 100 Years of Solitude, which was published in 1977, which was written by Gabriel Garcia Marquez, and this work is Octavia Paz, The Labyrinth of the Solitude, which was published in 1950, and it's a series of essay एनालाइजिंग मैक्सिकन आइडेंटिटी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दी मैप, है ना, कि लैटिन अमेरिका और लैटिन अमेरिकन लिटरेचर्स कहाँ पे बोली जाती है, कहाँ पे उत्पन्न हुई, ऑल दीज थिंग्स. And culture and the human condition is the context of the exceptionalism and the modernism. So here we are done with our European, Russian and the African, Latin American literature. In upcoming videos, what we are going to cover, I have already make a video on the linguistic and the language. If you haven't watched it, please watch it. There is already one video on the linguistic and learning. I have mentioned all the, I have also had a video on research methodology. Okay, then in upcoming video what we are going to do, we are going to cover literary criticism and the theory, classical to the contemporary criticism, where we are going to cover Aristotle, Longuis, new criticism, post structuralism. Not only this, but lots of things we will cover. We will also cover the medieval criticism, as well as we will cover the Renaissance criticism, new classical criticism. So you haven't found this type of video on the YouTube, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर एज में जो भी क्रिटिसिज्म चल रहा था उसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल पाए. सो इफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर joining me in this video. I will see you in my next video. Thank you so much guys, thank you so much.